Okay, beta. So we are going to start with the chemical bonding. Chemical bonding is basically in our sequence is the second chapter. The first one is atomic structure. Atomic structure की जितनी भी knowledge है, जो हमने atomic structure में सीखा, like how to find out, especially the electronic configuration, 1s2, 2s2. You should know that the outermost electron is present in which shell or which subshell. ठीक है, ये सारी knowledge यहाँ पे utilize होगी. हमें पता होना चाहिए कि if you have a bond formed between hydrogen and chlorine, then there is the outermost electron of hydrogen is present in a S subshell. The outermost electron of chlorine is present in a p subshell. So this is basically the sp orbital overlapping. Okay, clear? Let's move forward towards the chemical bonding. The chapter chemical bonding is start with the basic definition of bonding. So if I ask you, okay, what is the chemical bond? Basic chemical bond है क्या? So the most simplest definition of chemical bond is basically the force of attraction. ठीक है? So chemical bond को हम define करते हैं कि it is basically the force of attraction present between two atoms. The force of attraction present between atoms in a molecule. Okay, if this force of attraction is formed by the complete transfer of an electron, then it is called ionic bonding. If it's formed by the sharing of an electron, it's called a covalent bonding. And if it is between the positively charged metal ion and a sea of delocalized electron, then it is called the metallic bonding. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं. As I said कि basically ये क्या है? ये force of attraction है. अब बात करते हैं how many different type of attractive forces we have in a molecule. एक molecule में या एक chemical system में कितनी types of force of attraction हो सकती हैं? तो we are talking about types of attractive forces. ठीक है, कितने different किस्म की attractive forces हमारे पास हैं हमारे किसी भी molecular system में. So basically the force of attraction is divided into two types. Okay, the first one is called intramolecular forces. ठीक है, intramolecular forces. And the second one is called intermolecular forces. Intermolecular forces. ठीक है, intermolecular and intramolecular. Intramolecular forces का मतलब क्या है? It is the force of attraction present between the atoms within a molecule. Force of attraction present between the atoms. Okay, within a molecule. Between the atoms, the force of attraction होगी. This is called basically intramolecular force. Intermolecular forces का मतलब होता है the force of attraction present between the molecules. ठीक है? अच्छा, एक example देते हैं इसकी. Let's see. If I say that you have two water molecules, hydrogen, oxygen, and hydrogen. ठीक है? This is a water molecule. There is another water molecule, HOH. ठीक है बेटा? अच्छा, within a water molecule between the atoms, इनमें से कौन सी bonding है जो within a water molecule between the atoms है? This is the force of attraction जो atoms के दरमियान है ना? And this force of attraction is basically called the covalent bonding. This is a covalent bond. Okay? Now इसको हम कहेंगे this is a intramolecular force. अच्छा, आपको याद है from O levels what is the force of attraction present between the molecules? यहाँ पर कौन सी force of attraction होती है between two water molecules? If you remember, this is called the hydrogen bonding. This is called hydrogen bonding. As the hydrogen bonding is present between two water molecules, so this is called
intermolecular force. This is called intermolecular force. बात समझ में आई? देखो, there are two types of force of attraction that could be present. Intramolecular force of attraction, it means that the force of attraction present between the atoms within a molecule. It comprises of the covalent bonding, ionic bonding, metallic bonding. ये सारी intramolecular forces हैं, ठीक है? Intermolecular force present between the molecule, which is hydrogen bonding. इसके अलावा van der Waals forces होती हैं, दो आप O levels में पढ़ के आए, और भी होती हैं, इससे आगे चलेंगे. अभी basic idea ये था कि you should be familiar with the term intermolecular एंड इंट्रामोलिकुलर. ठीक है, तो ये क्लियर है? इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर बताओ भी. इज इट क्लियर? सही है. नाउ टाइप्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. एंड इफ आई आस्क यू डिफाइन इंट्रामोलिकुलर फोर्स, आप क्या डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एटम विद इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. दिस इज फर्स्ट वन, आप पढ़ के आए, आयनिक बॉन्डिंग. सेकेंड वन, कोवेलेंट बॉन्डिंग. थर्ड वन, metallic bonding. And the fourth one is basically called coordinate covalent bonding. Coordinate covalent bonding. ठीक है, इसी को हम dative bonding में करते हैं. This is also called dative bonding. ठीक है बेटा, आई थिंक यू गाइस आर फेमिलियर विद द आयनिक बॉन्डिंग. आप पढ़ के आ चुके हैं वो लेवल्स में, कोवेलेंट बॉन्डिंग, metallic bonding and coordinate covalent bonding. In this chapter, ionic bonding and metallic bonding is exactly the same as it was on in O levels. ठीक है, exactly same है, इसमें कोई difference नहीं है. In a similar way, intermolecular forces, there are three types of intermolecular forces. क्या डिफाइन किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमारे पास देखो, अब एज यू रिमेंबर हमारे पास बस सर्विस होती है. एक बस सर्विस होती है इंट्रा बस सर्विस, एंड इंट्रा बस सर्विस जो है विद इन अ सिटी मूव करती है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. डिफेंस से क्लिफ्टन जा रही है जो बस जा रही है, दैट्स कॉल्ड इंट्रा बस सर्विस. इन अ सिमिलर वे वी हैव इंटर बस सर्विस. इंटर बस सर्विस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. यहाँ से बैठे हैदराबाद गए, यहाँ से बैठे लाहौर गए, दैट्स कॉल्ड बेसिकली द इंटर सिटी बस सर्विस. इन अ सिमिलर वे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान. ठीक है, क्लियर? Now there are three different types of intermolecular forces. The first one is called van der Waals forces. सुना है पहले नाम? O levels में. ठीक है. The second one is dipole forces. And the third one is hydrogen bonding. Somehow you might be familiar with hydrogen bonding and van der Waals forces. ठीक है, लेकिन हम और डिटेल में पढ़ेंगे. अच्छा, चैप्टर की थीम कुछ ऐसी होगी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ओ लेवल्स टॉपिक. आयनिक बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग कवर अप करेंगे, एंड देन आई मूव टुवर्ड्स द कोवेलेंट बॉन्डिंग. थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्डिंग करने के बाद वी डू द डेटिव बॉन्डिंग, एंड देन वी डू द रेस्ट ओवर कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग इज इन अ डिटेल इन दिस चैप्टर, बहुत ज्यादा डिटेल में. ठीक है, क्लियर है? लेट्स स्टार्ट with the basic intermolecular force, which is the first one, ionic bonding. If I ask you define ionic bonding, क्या होती है भाई? Ionic bonding. Let's define it. देखें, ionic bonding is basically, it is an electrostatic force of attraction
present between positive and negative ions. What does electrostatic means? Electrostatic means the force of attraction present between positive and negative charges. Whenever you have charges involved, पॉजिटिव नेगेटिव हम हमेशा उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ठीक है. सो इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ठीक है. क्लियर? एनी एनीथिंग एल्स अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन? सॉरी, आयनिक बॉन्डिंग. कोई और बात? इफ यू रिमेंबर, हम कहते हैं कि इट इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. इट इज फॉर्म by the complete to another. सब ओ लेवल्स है. क्विकली चलते हैं इससे आगे. ठीक है. मोस्टली बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. ओ लेवल्स में हम कहते थे कि इट इज ऑलवेज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, बट हियर आई यूज द वर्ड मोस्टली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑलवेज एंड मोस्टली? ऑलवेज का मतलब कभी भी नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के अलावा नहीं होगी. मोस्टली का मतलब ज्यादातर होगी लेकिन कुछ जगहों पे नहीं होगी. द एक्सेप्शन इज बेसिकली all ammonium salt. Okay, ammonium is basically a non-metal cation. Non-metal cation. ठीक है. So all ammonium salt are the exceptions. And if I give the example, it is ammonium chloride. It could be ammonium sulfate. ठीक है. These are basically the exceptions from this. ठीक है बेटा. सो हम कहाँ तक पहुंचे? आयनिक बॉन्डिंग डेफिनेशन ग्रीन से लिखिए. इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट between positive and negative ion. It is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. ठीक है. Mostly between metals and non-metal. If I ask you about the example of ionic bonding, there are lots of examples. The most simple and the most common example is the example of sodium chloride, all metal chloride, metal oxide like magnesium oxide. It could be magnesium chloride. ठीक है. It could be sodium oxide. कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो मेटल और नॉन मेटल की. ठीक है ना. आसान है. Let's quickly move towards the dot and cross diagram. So याद रखिएगा, in all A levels we mostly show outermost electron only. ठीक है. outermost electrons only. हम सिर्फ शो करते हैं outermost electrons. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? Let's take an example of a simple example, sodium chloride. Now you know that sodium proton number 11, this is if I write down the O levels electronic configuration, तो 2, 8, 1 होता है ना? But if I ask you to write down how many electrons are there in Na positive, so it's 10 electron, 2, 8, है ना? In a similar way, Cl17, देखो, I'm just saying कि O levels electronic configuration लिखने से it becomes slightly easier to understand, क्योंकि टॉपिक ही सिर्फ उतना ही है जितना O levels में है. So this is 2, 8, 7. But if I ask you to write Cl negative, तो Cl negative क्या होगा बेटा? 2, 8, 8. ठीक है. If I have to draw the dot and cross diagram for Na positive, आपको याद है स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे हम and we place the positive sign. अब मुझे बताइए कि how many electron I should show in the outermost shell of sodium. कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं मुझे?
बताओ भाई, कितने हैं सोडियम के आउटर, सो Na पॉजिटिव के आउटर मोस्ट शेल में 8 है, तो जस्ट शो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 6 7 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन. There's no need to draw the circle. अगर आप चाह रहे हैं तो you can draw it. ठीक है, and then Cl obviously 8 electron, but make sure that you draw 1 electron from sodium. Thanks. 7 cross होंगे और एक dot, and you have to draw that this is dot and chlorine is cross. Can you please try MgCl2? MgCl2 ट्राई करो MgCl2 को जल्दी से. So it is magnesium, it's 1 2 8 electron in the outermost shell of 2 plus, and then you have chlorine Cl dot dot. ठीक है बेटा, and then draw 1 chlorine on the other side. ठीक है, I hope you remember this is all O levels. ठीक है, so if they ask you about the dot and cross diagram of any atom, or sorry, any ionic compound, you can draw simply as it was in O levels. Avoid drawing the circle. अगर circle बना भी रहे हैं तो it doesn't matter, आप बना सकते हैं circle. If you are comfortable with it, draw it. लेकिन it should look like a circle. ठीक है ना, ऐसा ना हो कि अजीब अजीब सी शेप्स बना रहे हो. तो मेक श्योर कि सर्किल बना रहे हो तो सर्किल की इसमें बनना चाहिए. Now let's talk about the last bit of it, which is the properties of ionic compound. हाँ भाई, any property of ionic compound? The first property? No, the first property should be about the state symbol. So they are solids with high melting point, ठीक है, and boiling point. They are solid, yes, with high melting point and boiling point. Clear? और ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है आयनिक कंपाउंड का, ये डिफाइन होता है, इट इज कॉल्ड जायंट आयनिक लेटिस. ठीक है, अच्छा, व्हाई दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, मैं रीजन भी साथ साथ दे रहा हूं, पूछा जाता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस. ठीक है, because ions are held together by strong force of attraction, strong ionic bonding. That's why it is called it. They have a high melting point. Okay. Why? And the solid structure is basically defined as a giant ionic lattice structure. What is the term lattice means? Lattice term use होती है crystalline solids के लिए. ठीक है. And if we have to draw it, तो हम इसके structure को किस तरह draw करते हैं? Yes, we draw a cube. ठीक है, and then we draw alternate positive and negative. ठीक है. No need to draw this cube. If you remember it, then it's perfect. O levels में तो हम बहुत डिटेल में करते हैं. ठीक है, I'm just revising it कि आपको याद आ जाए कि हम इसी तरह से ड्रॉ करते थे. ठीक है ना. ठीक है बेटा, so this is basically the basic structure of a ionic solid. इसी को हम कहते हैं this is a giant ionic lattice structure. एक की पॉइंट याद रखिएगा, the structure of all ionic solid is same. The structure of all ionic solid
इज सेम। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि गिव मी द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेम ड्रॉ करोगे। सोडियम ऑक्साइड सेम, एल्युमिनियम ऑक्साइड सेम, मैग्नीशियम क्लोराइड सेम, ऑल आयनिक कंपाउंड्स हैव द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, very clear? So they all have the similar structure. ठीक है, नेक्स्ट कुछ आवाज आ रही थी कि दे आर soluble in water, soluble in water. ठीक है, why they are soluble in water? Being an ionic compound, water can break the ionic bonding. ठीक है, ionic solid. My question is, O levels में हमने पढ़ा था, याद है solubility का हमने एक चार्ट पढ़ा था कि all nitrates are soluble, ठीक है, all carbonates are insoluble, chlorides are soluble, lead और silver chloride insoluble होते हैं। बेसिकली वहां इनसॉल्युबल टर्म के बजाय हमें पार्शियली सॉल्युबल टर्म यूज करनी चाहिए थी। ठीक है, ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल, द सॉल्युबिलिटी माइट बी मोर और द सॉल्युबिलिटी माइट बी लेस, बट दे ऑल आर सॉल्युबल। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but in molten or in aqueous form। ठीक है बेटा, molten और aqueous form में, why? Because in molten or aqueous form ions are free to move। ठीक है, याद रखिएगा, there are two types of electrical conduction। ठीक है, वन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टेक्स प्लेस इन मेटल्स, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री electrons। In ionic compound, as the electrical conduction is taking place by the movement of free ions, so this is called electrolytic conduction। इसको हम electrolytic conduction कहते हैं, that one वो जो free electrons की वजह से होती है, that's called the electrical conduction। सही जी, आगे चलते हैं। इतना ही अगर आपको याद हो कि आयनिक बॉन्डिंग का चैप्टर हमारे टॉपिक हमारे पास था इन ओ लेवल्स, ऐसे ही है ना, द सिमिलर इतना ही हमारे पास ए लेवल्स, similar type of question, properties are related, but yes, the weightage is less, they ask less question from this। Now let's move towards another topic which is exactly the same as it was in O levels, which is the metallic bonding। मेटालिक बॉन्डिंग, हाँ भाई, मेटालिक बॉन्डिंग मेटल्स में होती है, यस बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन होती क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन मेटालिक बॉन्डिंग, कैसे डिफाइन करेंगे? पहले बताएं, कैन आई यूज अ टर्म दैट इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between no, it is an electrostatic force of attraction between a positively charged metal ion and a sea of free electron, delocalized electron। ठीक है, चलो दोबारा से लिख लेते हैं डेफिनेशन को। इट इज an electrostatic force of attraction between positive charged metal ion and sea of delocalized electrons। ठीक है, positive charge metal ion and a sea of delocalized electron, this is basically the definition। it is also an electrostatic force of attraction because you can see the charges are involved, इसलिए हम इसको भी electrostatic force of attraction ही बोलेंगे। and if you remember, हम O levels में डायग्राम बनाते थे, they might ask you to pick the diagram for the correct metallic structure or diagram that show the metallic bonding। सही है जी, तो आपको पिक करनी आनी चाहिए। रिमेंबर, हम इस तरह से
And then you have to show the electrons 1 2 3 4 5 6. It's not necessary, लेकिन कोशिश करें कि equal number of positive charges and electrons आप show करें. ठीक है, this is basically the metallic bonding. There's no dot and cross diagram for metallic bonding because it is a structure based like the diagram. So let's move towards the properties of metals. The first property, हाँ भाई, first property क्या थी metals की? Same property, solid with high melting points. Solids with high melting point and boiling point. Why they are solid? Because due to strong metallic bonding. ठीक है बेटा, metallic bonding strong होने की वजह से they are solid. Now the next point, good conductor of electricity. हाँ भाई, why they are good? Due to the presence of, yes, the outermost electron is delocalized. ठीक है बेटा, next one, any property insoluble in water, okay, but reactive metals can react with water. ठीक है बेटा, last point, malleable and ductile, means this can be stretched into wires or it can be hammered into any shape. Why metals are malleable and ductile? Due to, बोलो भाई, layer type structure. ठीक है, these layers can slide over one another. ठीक है बेटा, so these are the properties. A very simple one, O levels वाली है, solid with high melting point and boiling point due to strong metallic bonding, good conductor of electricity and heat due to the presence of delocalized electron, insoluble in water, but reactive metals can react with water, malleable and ductile due to its layer type structure. These layer can slide over one and other. ठीक है, clear? और metallic bonding से related इतना ही topic हमारे syllabus का part है. Let's give it an overview. अब तक हमने क्या किया? देखिए बेटा, we started with the basic definition of a chemical bond. The force of attraction present between the atoms in a molecule is basically called a chemical bond. There are two types of force of attraction present. The first one is called the intramolecular forces, which is basically the normal chemical bonds. ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं. The force of attraction present between the atoms within a molecule. Intermolecular force is the force of attraction present between the molecules. And I gave you an example of a water molecule between hydrogen and oxygen atom. In a water molecule, this is called the intramolecular force. And within two water molecules, there's a hydrogen bonding present, and this hydrogen bonding is basically called the intramolecular force. Intramolecular forces are basically the ionic bonding, covalent bonding, metallic bonding, and a type of covalent bond which is called the coordinate covalent bonding or dative bonding, DATIV.
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें से मैंने कहा था कि हम आयनिक और मेटालिक बॉन्डिंग कवर करेंगे। आपने देखा कि वी ऑलमोस्ट डन विद दिस, क्योंकि ओ लेवल्स था तो हमने क्विकली से कवर अप कर लिया। एंड देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्डिंग डेफिनेशन आनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट between positive and negative ions. It is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom, mostly between metal and non-metal. I didn't use the term always between metal and non-metal. Reason क्या है कि reason ये है कि all ammonium salts are the exceptional cases. ठीक है? Ammonium ion is basically one of the few non-metallic cation, positively charged non-metal ion. डॉट एंड क्रॉस डायग्राम सिंपल मॉलिक्यूल्स की आपने बनाना सीखी एंड रिवाइज करिए, ऑब्वियसली इट वाज इन ओ लेवल्स, तो आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, मेक श्योर कि नेगेटिव आयन में आप एक इलेक्ट्रॉन मेटल का शो करेंगे। ठीक है, द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट इज बेसिकली टोटली डिफरेंट, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में, यस दे आर सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्यूबिकल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जाइंट आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। They are soluble in water, being an ionic compound, good conductor of electricity. ठीक है, good conductor of electricity है, but in molten or in aqueous form में, because ions are free to move. Metallic bonding, it is an electrostatic force of attraction between positively charged metal ion and a sea of delocalized electron. ठीक है, layer type structure होता है, solid with high melting point and boiling point due to strong metallic bonding. Good conductor of electricity and heat due to the presence of delocalized electron, insoluble in water, but reactive metal can react with water. Malleable and ductile. Malleable and ductile का मतलब it can be hammered to sheet, it can be a sheet, and it can be stretched into wires, and this is because of its layer type structure. Let's move towards the basic part. अब देखो, अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट होगी वो काफी टाइम तक चलती रहेगी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में काफी डिटेल में, we do the basic covalent bonding definition, O levels part, type of covalent bonding, and then we do the concept of a lone pair and bond pair, then polar non-polar covalent bond, then उसके बाद हम चले जाएंगे bond energy bond end की तरफ, then we give it a break for a while, and then we do the dative bonding, और फिर वापस से covalent bonding की तरफ आएंगे, and we do the shape of molecule stuff. ठीक है? So let's start with the covalent bonding. जी बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? एक बात याद रहती है बच्चों को, इट इज बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ऐसे ही है ना? सो कैन आई से दैट कोवलेंट बॉन्डिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सारी बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्यों सारी बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व, न्यूक्लियस हैव अ positively charged proton and electrons have negative charge. So whenever you have a positive and negative charges, it is also it is always called electrostatic. So can I say that it is an electrostatic force of attraction between the nuclei of two atoms and shared pair. इस shared pair को हम bonded pair भी कहते हैं, of electrons. ठीक है, कॉन्सेप्ट ओ लेवल से है। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, शेयर हो गया। अब दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद बोथ ऑफ दीज न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड दे बॉन्डेड टुगेदर बाय अ कोवलेंट बॉन्डिंग। देखिए होता क्या है, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। ठीक है, इन अ सिमिलर वे दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन and this is the electron, one electron from each atom. अब मैं आपको बताता हूं कि how many attractive and repulsive forces we have. Now the nuclei of one atom इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, the nuclei of this atom इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा। दिस इज द फोर्स ऑफ attraction of the two nuclei on the bonded pair of electron. But
At the same time, you have two repulsive forces as well. These two nuclei repel each other, and these two electrons repel each other. ठीक है? अच्छा, ये बात याद रखिएगा. You should know that how many repulsive and attractive forces are present. ये आपको पता होना चाहिए. The attractive forces कौन सी हैं? Nucleus और electrons के दरमियान. Repulsive forces electrons के दरमियान, and the nucleus के दरमियान. ठीक है? As a result of this, these repulsive and attractive forces is a strong force of attraction. यानी जो resultant force होती है वो एक strong force of attraction होती है, and that strong force of attraction is called covalent bonding. ठीक है? तो हम यहां पर लिख लेते हैं the resultant force of all these attractive and repulsive forces is a strong force of attraction called covalent bond. ठीक है बेटा, they might ask you to about any attractive or repulsive forces present in this type of bonding. ठीक है? तो इसको अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी attractive or repulsive forces are present if you have a covalent bond formed between. ठीक है जी, यहाँ तक clear है? Let's move forward towards the type of covalent bonds. हाँ भी, how many different types? Remember, single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. Let's सबसे पहले बात करते हैं single covalent bond की. कैसे बनता है? Formed by the sharing of one electron from each atom. ठीक है बेटा, as an example, you could have hydrogen single covalent bond chlorine. You could have hydrogen single covalent bond hydrogen. You could have four single covalent bond in a CH4 molecule. Remember this? So this is basically the CH4, or all these are the single covalent bonds. बात करते हैं double covalent bond की. This is O level, so I'm just trying to cover it up quickly. Okay, beta. Formed by sharing of how many electron? Yes, 2 electron from each atom. ठीक है, formed by the sharing of 2 electron from each atom. As an example, if you remember, oxygen, double covalent bond, oxygen. Double covalent bond is represented by a double line. Or you have carbon, double covalent bond carbon, and then you have hydrogen, 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 and hydrogen. If you remember, this is basically called ethene. Okay, it's an alkene. We'll do it in organic as well. And this is O2, oxygen. And then we have the last one, which is C, triple covalent bond. Formed by sharing of 3 electrons from each atom. And the examples, remember the most common example? Nitrogen triple covalent bond.
N2 molecule, है ना? And then carbon, triple covalent bond carbon. Carbon can make all single covalent bond. Carbon can make two double covalent bond, or carbon can make a triple. Carbon double bond oxygen, double bond oxygen. This is carbon dioxide. ठीक है, तो single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. I hope the point is clear. It is exactly the same as it was in O levels. ठीक है, इसमें और कोई भी चीज different नहीं है. ठीक है बेटा. Let's move towards the dot and cross diagram, and within that dot and cross diagram, मैं एक चीज एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा. ठीक है, let's take a simple example of H2O. Okay, H2O. Now, oxygen, hydrogen, one proton, one S1. Oxygen, proton number 8, 1s2, 2s2, 2p2. Sorry, 2p4. 1s2, 2s2, 2p4. This is oxygen. If I ask you कि भाई इसकी बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करें तो आप बोलेंगे 2s. सॉरी, आप कहेंगे जनाब दिस इज बेसिकली 1s and it contain one electron. है ना? The हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1. In an outermost atomic orbital or sorry subshell of oxygen, this is 2px, 2py, 2pz. How many electron I have to fill? 4 electrons. So 1, 2, 3 and 4. सही. ऐसे ही अब होगा क्या कि दो हाइड्रोजन जो हैं वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. इज इट क्लियर? ये बात याद रखिएगा, नोट करके अपने पास लिखें. नंबर ऑफ unpaired electron in the outermost subshell is the number of covalent bonds formed by the atom. ठीक है जी, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा. जैसे नाइट्रोजन है 1s2, 2s2, 2p3. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 unpaired electron. That's why nitrogen always make कितने कोवेलेंट बॉन्ड? 3 covalent bond. NH3 बनाता है ना. Let's take an example again. So you have oxygen. Okay, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 6 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5 and then 6. One electron is shared with hydrogen and this electron is shared with hydrogen. So if I draw it in a line form, can I say that this is basically H2O, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अब 2-3 टर्म्स मुझे यहीं पे आपको क्लियर करनी है. पहले मुझे बताइए कि आर यू गाइस रिलेटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ये बात क्लियर है? सही है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे. दूसरी बात, वाटर की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम या वाटर की लाइन फॉर्म में बॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी तरह पता है. अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि द एटम व्हिच इज लेस इन नंबर, मतलब यू हैव 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ऐसे ही है ना.
सो कौन सा एटम का नंबर में कम है? ऑक्सीजन. दिस इज बेसिकली कॉल्ड सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम. सो H2O में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन. ठीक है. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो शेयर हुए में हैं, दे आर कॉल्ड शेयर्ड पेयर, या मो लेवल्स में ही पढ़ाते हैं. एंड दे आर आल्सो कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स. ठीक है. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स. देखो, ऑक्सीजन के पास यू हैव टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग. ऐसे ही है ना. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन थे. 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग. 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग. दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हम लोन पेयर को डिफाइन कर लेते हैं यहां पर. The pair of electrons present in the outermost shell. ये बात याद रखिएगा, सारे नहीं, सिर्फ outermost shell में. ठीक है. Not involved in bonding are called the lone pair of electron. Very important concept, lone pair आपको पता होने चाहिए. So if I ask you, in water molecule, can I say around the central atom you have 2 bond pairs? हाँ भाई, you have 2 bond pairs and you have 2 lone pairs. बस ये पिक करना आपको आना चाहिए. इतनी डिटेल बताने का मकसद ये था. You should be able to identify how many bond pairs and how many lone pairs around the central atom. Let's try the next one, which is NH3. ठीक है. सिंपल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. NH3, नाइट्रोजन, प्रोटॉन नंबर 7, हाइड्रोजन आपको पता ही है. तो नाइट्रोजन हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3. Can you see that how many unpaired electron? 3 unpaired electrons. सही है. सो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास. सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा NH3 में? Yes, nitrogen should be the central atom. So yes, 1, 2, 3, 4, 5. Dot cross hydrogen and cross hydrogen. नाइट्रोजन को हमने रिप्रेजेंट किया है बेटा डॉट. की जरूरी है बेटा बनाना. हाइड्रोजन को हमने क्रॉस से करेंगे. मेक श्योर दैट यू ऑलवेज ड्रॉ दिस की. सही है. So this is NH3. How many bond pair beta? How many bond pair in NH3? कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे? Yes, 3 bond pairs. And how many lone pairs? 1 lone pair. Whenever they ask you about the bond pair and lone pair, they mostly ask about the central atom. ठीक है. तो हमने सेंट्रल एटम के बारे में क्या सीखा था कि द एटम व्हिच इज लेस इन नंबर इज बेसिकली द व्हिच इज लेस इन नंबर इज बेसिकली द सेंट्रल एटम. बट इफ आई आस्क यू अबाउट दिस मॉलिक्यूल HCl, इसमें तो भाई एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है. हाउ वी डिसाइड व्हिच वन इज द सेंट्रल एटम? हाँ, नहीं. इस केस में हम किसको सेंट्रल एटम बोलेंगे? द वन दैट हैव मोर लोन पेयर. द एटम with lone pairs is considered as central atom. ठीक है. In this case, chlorine is basically the central atom. Now, chlorine, the proton number is 17. If I write down the electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अब मुझे जल्दी से बताइए कि how many unpaired electron you have in the outermost subshell of
क्लोरीन, जल्दी से बताओ भाई। 3p5 है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, we have one unpaired, so how many bond chlorine should make? Single covalent bond. ठीक है, so yes, you have hydrogen cross dot for chlorine, single covalent bond, and you have how many lone pair? outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो 1 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर्स। ठीक है, 1 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। CH4, नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन, प्रोटॉन नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। how अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसमें थोड़ा सा आपको इशू रहेगा, कार्बन की बॉन्डिंग में हम इस तरह से प्रिडिक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन स्लाइटली डिफरेंट। ये बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा। बस की पॉइंट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लियर। लेकिन यस, हम ओ लेवल स्टाइल में सोच लेते हैं। कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, है ना, because it is in a group 4 of the periodic table, making 4 covalent bonds with 4 hydrogen. Can you see any lone pair of electrons? 4 बॉन्ड, 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे और चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो कैन आई से इट हैज 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स। सेंट्रल एटम कार्बन है बिकॉज इट इज लेस इन नंबर, है ना, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। देखो, लोन पेयर के बारे में जब सोचेंगे जब यू हैव द इक्वल नंबर ऑफ बोथ एटम, जैसे HCl का केस था, HBr है, HF है, वहां सोचा जाएगा कि जिसके पास लोन पेयर है वो सेंट्रल एटम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। मेक श्योर कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्लियर हो, द डेफिनेशन ऑफ लोन पेयर आपके पास क्लियर होनी चाहिए। The pair of electron which is not involved in a bonding present in outermost shell, and then ये concept clear होना चाहिए except the carbon one, that the unpaired electron present in outermost shell is basically the number of covalent bond formed. So I almost covered all the basic O levels concept of this chapter, plus the new concept of a lone pair and the shared pair of electron O levels में होता है, and a simple dot and cross diagram. अच्छा, कुछ dot and cross diagram आपको खुद से try करनी है। ठीक है, जैसे ट्राई कीजिएगा आप कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO, NO2, carbon monoxide. Okay, so these are the dot and cross diagram that you should try, and you can search on internet. अगर आपको नहीं मिल रही तो आप उसमें इंटरनेट पे सर्च करके भी बना सकते हैं। These are the some example. ठीक है, in as minimum as initial you should try these. Okay, so I'm just keeping it till here, and then we will continue with the polar non-polar covalent bond concept in the next class. Okay. चलो बेटा, आज यहाँ तक रखते हैं, and then see you on Wednesday, inshallah.